Hi everyone, welcome to another session. So in this session, we are going to learn about switch case statement in JavaScript. Okay. So why we require the switch case statement? It is same like your EPS ladder. Okay. We saw that how we can implement the EPS ladder in JavaScript. Same thing if you want to do in very less line of code, then you can go with the switch statement. So let's take the example. So let's say we have another example that we wanted to show the month on the basis of number, month as a string on the basis of number. Okay. Same thing, whatever we did yesterday with the help of EPS ladder, we can do that by using the switch statement. So see, I have the number here prompt, and I will ask someone to enter month number. Okay. And then I want to display, if it is 1, I want to display Jan. If it is 2, I want to display February, like that. Okay. So switch month, then case 1. Okay. If it is 1, then show alert Jan and break. Okay. This is how we can basically use the switch case statement in JavaScript. Okay. So case is equal to 2, 3, 4, 5, 6, and so on. Okay. If it is not in between these numbers, then you can also write the default case. Default means else block in the epils. Same. Okay. Default is invalid number. That's it. Okay. And you can change the name as well. Feb, March, April, May, June. Okay. Now, if you run this project, it will ask you enter a month number. Okay. Let's say I have entered 2. Then it will check if whatever number you have entered, whether it is 1, no, then it is 2, yes, it will go and print this statement alert Fib and break. Break means it will not execute the further statement. If this case is false, then only it will go and try to execute next statement. If this case is true, then it will execute this line and break. Okay, let's see the output. See, it is asking for the number, so I just entered 3. Okay, so it is invalid number. Now why it is showing invalid number is because whenever you will enter something, that will come in your program as a part of string data type. Okay, and we are checking here number. So you have to basically convert this string into number first and then verify with all these cases. Okay, how to convert that? Go here and then parse int function is there. Okay, in JavaScript we can use parse int. This parse int function will basically convert whatever value you will provide here into a number, and then it will compare that number with the each and every case from the switch case. Now let's refresh. Now enter 3. Okay, you can see it is showing March. Okay, if I refresh, enter let's say 4. Okay, it is showing April. If I refresh, I am entering 1. Okay, it is showing Jan. Okay, so this is how it will just basically display you whether it is 1 or 2 or 3, and on the basis of that it will basically print you the respective statement from the switch case. So this is the switch case syntax and example.
Okay, just note it down quickly. We'll go to the next point. Okay, now next topic is function in JavaScript. Okay, what is function? It is very important topic. So what is function? Function is one of the block which we can write inside the JavaScript, and we can call it whenever you require. Like, so how to create a function first of all. Okay, so let's comment this code, remove this code. Okay, now what is function? Function is one of the block where we can create one function, and we can call that function on some events or whenever you want to basically call it. So let's say I have a function like function show messages, show message. Okay, and in this function I have one statement that is alert hello world. Okay, this is the function. Now we have just declared the function. Okay, this is how we can just declare the function. But if you want to call this function from various places, you just need to call like this: show message and semicolon. So this is how you can just create a function. While creating the function, you can mention the function keyword, function name, and parentheses. Okay, and in that function you can do some operation. This is the body part of that function, and you can call the function with the help of function parenthesis open close. Now if you run this project, you can see hello world message is displaying here. But if you only declare the function and you didn't call that, it will not show any message. See, there is no message here. It means function has two things. One is declaration and function calling. Okay, this is function declaration. You have just created the function. You can create the function outside of this event as well. Okay, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दो, और जब भी आपको फंक्शन लगेगा, अभी आप बोलोगे कि सर व्हाई वी रिक्वायर फंक्शन, ये लाइन तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डाल सकता हूँ. यस, यू कैन डू दैट. बट अभी मान लो आई हैव वन नंबर a is equal to 10, another number b is equal to 20. ओके, दोनों का मुझे क्या करना है, एडिशन करना है. तो मेरे पास एक फंक्शन है, वो क्या करता है, एडिशन करके देता है. जैसे कि सम, and it will do the addition of two variables. So both variable I am sending here as a parameter. Okay, and function logic is like this: return a plus b. Okay, so this is the indentation problem. You solve that as well. Now I have one sum function which will basically do the calculation for me. Calculation, like it will make the sum of two integer variable. Now I wanted to display the sum. Alert, I wanted to display the sum of a and b. Okay, so how I will do that? I will just call the sum function first, and then I will pass the parameter a comma b. Okay, अभी मुझे क्या करना है, ये दोनों वेरिएबल की सम हो गई. मेरे पास और दो वेरिएबल्स है, जैसे कि c इक्वल टू 50 एंड d इज इक्वल टू 100. ओके, और इन दोनों की भी मुझे सम करनी. So I should not write this actual business logic to do the sum every time in my program. Instead, I should move that logic inside one of the function and use that function into multiple location. Okay, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं कॉल करूंगा C and D. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी जो सम करने का लॉजिक है दैट इज एट वन सेंट्रलाइज प्लेस. ओके, इट इज सेंट्रलाइज प्लेस, यानी ये जो लॉजिक है ये एक फंक्शन के अंदर है, and I'm just calling that function from this
two places. Place number one is 41 and 45. Got it? So we are calling that function from these two places. And if someone want to change that logic, अगर किसी ने बोला कि before making the sum, please log the message in the console, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह पे हमें लॉग करने की जरूरत नहीं. We will just log in the centralized place here like this, console dot log a. ओके, यहाँ पे a लॉग करेंगे, यहाँ पे b लॉग करेंगे. यहाँ पे a इज इक्वल टू या फिर num 1 इज इक्वल टू दिस. और किसी ने बोला कि भाई आप जब लॉग करोगे, जब भी सम करोगे, आई वांट टू लॉग कि यहाँ पे फंक्शन में कितनी बार आया और कौन से नंबर भेजे थे और उनका सम क्या आया. ओके, आई वांट टू लॉग दैट. So that you don't have to basically a plus b. Okay, you don't have to write everywhere. This is your centralized code. ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत बड़ा बिजनेस लॉजिक लिखना है, उसमें 100 लाइंस लिखने हैं. ओके, मान लो अभी सम फंक्शन के अंदर मेरे पास 100 लाइंस है, 100 लाइंस. सो आई वांटेड टू कॉल दिस फंक्शन फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस. तो वहां पे आपको एक ही लाइन लिखना है फिर नेक्स्ट टाइम कॉल करने के लिए. अगर आपका फंक्शन ही नहीं रहता तो ये 100 लाइन्स आपको हर जगह पे लिखनी पड़ती. 41 पे 100 लाइन, 45 पे 100 लाइन, बिकॉज यू डोंट हैव अ वे टू रीयूज दो 100 लाइन्स. ओके, अगर आपको वो 100 लाइन्स यूज करने हैं विच आर इन्वॉल्व टू राइट द एक्चुअल बिजनेस लॉजिक इनसाइड द फंक्शन, if you want to use those 100 lines, reuse those 100 lines, then you can create a separate function. Inside that, write your common business logic, call the function whenever you want to call it. That's it. Okay, अभी देखो, रिफ्रेश करके देखते हैं. 30. ओके, 150. अभी दो बार हमने वो फंक्शन को कॉल दिया है, तो कंसोल जाके देखो, यहाँ पे देखो, num1 was 10, 20 और दोनों का सम हुआ 30. ओके, यहाँ पे कॉन्केटेनेशन हुआ है, बट इट इज 30. देन फर्स्ट नंबर was 50, सेकंड was 100, इट बिकम्स 150. ओके, अभी ये ऐसा क्यों दिखा रहा है 102050? बिकॉज इट डिड द कॉन्केटेनेशन ऑपरेशन बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रिंग वेरिएबल. अगर ऐसा करेंगे तभी वो बराबर दिखाएगा. सी, फर्स्ट नंबर वाज 20, 10, 20 become 30 and second number is 150. So 50, 100, 150. So basically we are just calling the same function for doing the job, same job, but on the different values. यहाँ पे हमने सम फंक्शन कॉल किया है, उस पे हम a कॉमा b भेज रहे हैं. यहाँ पे सम फंक्शन कॉल किया है, उस पे हम c कॉमा d भेज रहे हैं. सो we are calling one common function to do the same job on the two different variables, two different values. Okay, so this is why you will require the function in JavaScript. Function is just one coding block which we can write inside the curly brace open and curly brace close. We can give the name, we can take the parameter list. Also, you can use function keyword to write the function. So this is your function declaration. As soon as you create a new function, you can call that function from anywhere like this. Okay, जब भी आप फंक्शन कॉल करना चाहते हो कर सकते हो, नो इश्यूज. इट विल जस्ट, you just need to mention the function name, pass the parameter a comma b, that's it. Okay, so defining and calling a function, ये टॉपिक अभी हमने देखा. add parameters to the function, ये भी देखा. default values for the function. अभी default values क्या होता है? मान लो किसी ने यहाँ पे वैल्यू पास इन नहीं की है. ओके, ऐसा भी हो सकता है. चलो अपन अलर्ट में नहीं दिखाएंगे, we will only show in the console. Okay, एक फंक्शन है मेरा, फंक्शन शो मैसेज.
ये क्या करता है, अगर किसी ने मैसेज भेजा तो वो मैसेज दिखाने का काम करता है। ओके, अलर्ट मैसेज, ये फंक्शन है, इट विल जस्ट डिस्प्ले द मैसेज वॉट एवर यू विल सेंड एज अ पैरामीटर। ओके, एक पैरामीटर है मैसेज नाम का, अगर अपने वो पैरामीटर में कुछ भी वैल्यू भेजा वो यहाँ पे वो प्रिंट करेगा। ऐसे भी हो सकता है कि आपने कुछ वैल्यू नहीं भेजा, तो इन दैट केस क्या डिस्प्ले होना चाहिए, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ओके, ऐसा तो एक फंक्शन है, उसमें एक पैरामीटर है, उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू है वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ओके, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, उस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। हाउ टू कॉल इट, जस्ट कॉल लाइक दिस, शो मैसेज हाय हेलो। ओके, so it will basically show you like this. So we have show message hello world. Okay, अगर आपने कुछ मैसेज भेजा, then it will, that this value will come inside this variable, and this variable we will show here as a alert. अगर मैंने कुछ मैसेज नहीं भेजा, मैंने बस ऐसा बोल दिया शो मैसेज, कुछ भी नहीं भेजा यहाँ पे, so there is no value we are sending as a parameter, so that's why it will take this value as a default value and display in alert. Okay, first of all ये चेक करो, with value चेक करो, रिफ्रेश, यहाँ पे आया हेलो वर्ल्ड। ओके, फिर विदाउट वैल्यू चेक करो, शो मैसेज, रिफ्रेश, यहाँ पे आया वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। गॉट इट, सो दिस इज योर डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, so this is how we can basically use the default value for the function parameter. Okay, next one था returning values from the function. Okay, अभी ये जो function है, we can also return the value. See, we are returning the a plus b. Here we are not returning anything. If we are not returning anything means this function has a void return type. Okay, you don't have to explicitly mention that, but that has a void return type by default if you do not return anything. Okay, and this function has return type, it means it will return something. So whatever it will return, you can just take it as a response, like where total is equal to sum of 44 comma 66, like this. तो ये जो total है, you can you can use in your program. You can just display that in alert, or you can just do some more calculations with it. Okay, now you can see there is no alert box inside the sum function, and you will get the total as a return response of this function here, and we will display the total in the alert box. So it should display 110. Okay, so this is how we can basically display the total, or we can basically return the value from the function. As soon as you return that value should assign to some variable, so that you can use that value in a memory for further program, or you can do some more operations or display it in the output. Okay, so that is for returning a value from the function. Now next one was understanding the variable scope. So let's say you have one function. Okay, let's say I have another function increment, where x return, not return but x plus plus console inside function
x. ओके, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिखा है where x इज इक्वल टू 10 इंक्रीमेंट x, और यहाँ पे लिखा आउटसाइड ऑफ फंक्शन. ओके, हमारे पास एक x करके वेरिएबल है. इस वेरिएबल को हम यहाँ पे भेज रहे हैं इंक्रीमेंट फंक्शन में. इसमें उसको बढ़ा रहे हैं, so it should become 11. Inside a function it will display 11, or outside a function what it will display you can see. This is your console. Refresh. Now it is saying console is not a function. Okay, console dot log here as well as here. Now refresh. See, inside a function it is 11 and outside a function it is 10 only. So but we just have increased the value, right? Here we have declared the x with 10. Okay, we have passed that 10 here in the increment. Then we have increased the value of x to 10 to 11 and print that. It should print 11. That is true. Let's take again. Inside the function it is printing 11. तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन इसके बाद फिर x का वैल्यू हमने तो 11 कर दिया था जो प्रिंट भी हुआ. उसके बाद कौन सा लाइन एग्जीक्यूट होगा? 44 नंबर का. फिर यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए था? It should print 11, right? Because we have increased the value inside the function. So why it is printing 10 again? यहाँ पे हमने तो एक वैल्यू बढ़ाया था इसका. Still it is showing 10 only. Why it is not showing new value here? The reason is variable has a scope. Okay, scope मतलब अगर आपने कुछ वेरिएबल को यहाँ पे पास किया, it will pass by value. Okay, by value means it will pass 10. It will not pass x. Okay, it will just pass 10. It will increase 10 to 11 here, display 11, and again जब ये फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट लाइन में आएगा तो x का वैल्यू, x का जो स्कोप है वो स्कोप ये करली क्लोजिंग से लेकर ये करली ओपनिंग तक है. इतना ही स्कोप है. अगर इसके बाहर जाता है दूसरे कोई किसी फंक्शन में और उसमें अगर x का वैल्यू चेंज होता है, so that new changes will be applicable within that scope only. ओके, इस x का वैल्यू ये दो करली के बीच में ही चेंज रहेगा. अगर आपने कुछ भी कर दिया, यहाँ पे 100 भी कर दिया x का वैल्यू, so that value will be only change or applicable for the specific scope. इस फंक्शन के अंदर ही उसका नया वैल्यू रहेगा. लेकिन इस फंक्शन के अंदर ये करली ब्रैकेट ओपन और ये जो क्लोज दिख रहा है आपको, एक मिनट ये सब निकाल लेता हूँ to avoid confusion. ओके, अभी देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो इट हैज अ स्कोप ओपनिंग कर ली टिल एक क्लोजिंग कर ली, इतना स्कोप है. अगर मैंने इसका वैल्यू यहाँ पे कहीं पे चेंज किया तो वो यहीं पे चेंज रहेगा. अगर x का वैल्यू मैंने इस फंक्शन में चेंज किया तो वो जो नया चेंज रहेगा वो इसी के अंदर रहेगा. लेकिन इसके बाहर एज सुन एज मैं जाऊंगा उसका वैल्यू फिर से वो डिफॉल्ट सेट हो जाएगा जो पहले था. गॉट इट? सो x इज इक्वल टू 10. We are increasing the value but inside this scope, so that's why that whatever value I will increase will be there in this function only. As soon as I come out of this function here, line number 4, it will have its own previous value that was 10, and that's why it is printing 10 here. So 10 was the original value, 11 was the inside function, means it is in increment function. So increment function के अंदर उसका 11 हुआ था, लेकिन जब वो फंक्शन के बाहर आया आउटसाइड, उसका वैल्यू ओरिजिनल 10 था. तो दैट्स व्हाई इट इज प्रिंटिंग 10. इट इज नॉट कीपिंग द न्यूली असाइन वैल्यू आउटसाइड ऑफ दिस फंक्शन बिकॉज इट हैज अ स्पेसिफिक स्कोप. ओके, तो वेरिएबल को क्या रहता है? स्कोप रहता है. तो दैट स्कोप यू बेसिकली नीड टू थिंक व्हाइल वर्किंग विद द जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम. अगर आपने यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज किया तो उसका जो नया वैल्यू रहेगा दैट विल बी विद इन दिस स्कोप ओनली. अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज किया इस स्कोप में तो दैट न्यू वैल्यू विल बी विद इन दिस स्कोप ओनली. ओके, नॉट आउटसाइड ऑफ दिस स्कोप. So this is how we can basically
uh, work with the scope. Now last topic है इसमें function में, that is function data type. So it is fairly straightforward. We can create function as a data type like this. So let's say I want to show message function. Okay, so I can just create one data type where show me equal to function और इसका एक मैसेज. ओके, एक फंक्शन बनाया मैंने. ओके, अभी देखो, ये फंक्शन एज अ डेटा टाइप बनाया मैंने क्योंकि इसका नाम क्या है, वेर शो मी. ये फंक्शन एज अ फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन. ये डिक्लेयर करके रखा है, ये भी डिक्लेयर करके रखा है, लेकिन एज अ डेटा टाइप शो मी. अगर मैंने अभी इसको कॉल किया दिस टाइप तो चलेगा. सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट फंक्शन एज अ डेटा टाइप एंड कॉल इट लाइक दिस. ओके, अभी ये मैं कमेंट कर देता हूँ, रिफ्रेश. दिस इज योर वेलकम मैसेज. So this is function as a data type because I have where show me plus function name, not function name, function keyword, and the actual business logic. And you can call that function by using the show me here. Okay, whatever variable name you have, you can call it like this. And then this is your function as a data type, and this is your normal function. We have created that function by using the function keyword, and you can call that like this increment. We just saw that example, right? So where x is equal to 2, we have pass x here, and we are printing x value. This is all. So it will first of all print 2, go inside the function. 2 plus 1 3, it will print here 3. Okay, and outside of that function it will print 2 only, because we haven't this newly effect will not be apply outside of this function. Okay, this is outside. So outside of this function, there is no effect on the x variable. That's why it will print the default value, that is true. Sorry, 2. Now if we refresh here, see inside the function it becomes 3, but outside the function it again become 2 because of the scope of the function. Okay, I hope you got the understanding of JavaScript functions and JavaScript switch case. Okay, we will see loops in the next session. Okay, let me stop the record.